पूरा एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल है। जब मैं बोलता हूँ कि एप्लीकेशन बेस्ड है, आपको थोड़े से फॉर्मूलाज रट्टे मारने पड़ेंगे, क्योंकि वो डिराइव नहीं है, वो एक तो आईएस कोड से दिया हुआ है या फिर कोई रिसर्चर से हम उठाते हैं। So that you have to keep in mind whenever I'm calling it as application based model. Now this is an interesting model than that. Before that, let us revise something because that is needed. Okay. हमने, so I've told you, like, we are in the chapter number 6, which is the chapter's name is pile foundation. The chapter's name is pile foundation. हमने अभी तक क्या किया? हमने अभी तक shallow foundation पढ़ा था, आज हम pile foundation पढ़ेंगे. Before moving into this chapter, you know Terzaghi's equation, and this is very important. अगर आप मास्टर्स करते हो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में, then you should know that the father of the geotechnical engineering itself is Terzaghi. हर जगह अपना इक्वेशन है, पाइल पे होने दो या फिर शैलो फाउंडेशन पे होने दो या फिर बहुत जगह पे Terzaghi's equation is there. Now Terzaghi ने, भाई साहब ने बोला था कि your ultimate bearing capacity of your soil is equal to CNC plus gamma D NQ plus 0.5 gamma B N gamma. Now, I'm not going into detail in this equation. Just remember these terms which I'm telling you. ये जो equation Terzaghi ने define किया था, it was for a shallow foundation. I'm just drawing a shallow foundation here. आपका shallow foundation कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करूं, ऊपर मैंने ग्राउंड सरफेस भी प्लॉट कर दिया. This is my shallow foundation. The first term in the Terzaghi's equation, it is the cohesion term. It is the cohesion term. अब इसका मतलब क्या हुआ? जो cohesion का जो effect है, देखो हर soil के अंदर दो चीजें होती है. हर soil के अंदर दो चीजें होती है. एक होता है cohesion और एक होता है friction. हर soil के अंदर, हर soil पे आपको दो चीजें मिलेंगी. एक है cohesion और एक है friction. तो इसमें जो cohesion का जो term है, one second, let me add some more peoples. Yep. इसमें जो cohesion का जो term है, it is given by CNC. If अगर कोई बोलता है it's a cohesionless soil, C is equal to 0, then this term is equal to 0, right? Second term, gamma D into NQ. This term was this soil. ये soil आपके foundation पे कुछ stresses डालते हैं, and that was equal to gamma into T. So यहाँ पे कुछ stresses डालते हैं, and that is equal to gamma into T. So normally in foundation, in shallow foundation, we have learned that this is called as surcharge term. This is called as surcharge का जो term है. Surcharge मतलब ऊपर जो soil है, उसका जो effect है, वो यहाँ पे account किया है. Last term, that is this term. ये किसके लिए था? ये जो नीचे का जो soil है, इसके लिए अपना ये term था. So this term was for base of the footing cutter. Why I'm making you to understand this? Because in pile foundation, we are going to use this equation, that is Terzaghi's equation, and we will derive some equation based on that. Okay, let me go to the next slide. Yeah, this is how a pile looks like. This is how a pile looks like. अब pile foundation जाने के लिए बहुत आपको ऐसा नहीं कि आप कौन से भी साइट पे pile foundation कर सकते हो. No, because it's uneconomical basically. हर पाइल फाउंडेशन अनइकोनॉमिकल ही रहता है. आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो साइट पे पाइल फाउंडेशन चाहिए कि नहीं चाहिए. जैसे अगर आपके पास एक बिल्डिंग है, अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक बिल्डिंग है, ड्रॉ इट. सो इसमें मैं शैलो फाउंडेशन पे भी डाल सकता हूं, बट अगर नीचे का जो सॉइल है, इफ इट इज क्ले सॉइल, और मोस्ट प्रिसाइसली जो इंडिया में भी जो सॉइल मिलता है, इफ इट इज अ ब्लैक कॉटन सॉइल. ब्लैक कॉटन सॉइल में प्रॉब्लम क्या है? इट स्वेल्स आउट. अपने G1 में पढ़ा था, मोंटमोरलाइट वाला जो सॉइल है, एग्जांपल ऑफ दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल. ब्लैक कॉटन सॉइल पे पानी गया ना, इट विल स्वेल आउट. पानी निकाला, इट विल स्ट्रिंक आउट. इससे क्या होगा? अगर सॉइल मोटा हो गया तो उसका जो बियरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, आपका बिल्डिंग सेटल हो जाएगा. That is the effect of consolidation that is going to happen. अगर ज्यादा सेटल होगा, इट्स नॉट गुड, देन यू हैव टू गो फॉर पाइल फाउंडेशन.
This is the requirement of the pile foundation. That is one point. Second point, normally जो bridges जो बनते हैं ना, जो bridges जो बनते हैं river पे, जो bridges जो बनते हैं river पे, इस पे आपको पाइल फाउंडेशन ही करना पड़ेगा और डीप फाउंडेशन के लिए जाना पड़ेगा. मोस्ट प्रिसाइसली हियर वी डू वेल फाउंडेशन वाला टाइप. सो दिस आर द थिंग्स वेयर यू change the shallow foundation to pile foundation. Also, if you are having a heavy load structure, then you have to go for pile foundation. अब pile foundation का basic क्या है? These are the piles. When I'm, अगर किसी को नहीं पता कि हम क्या discuss कर रहे, these are the piles. This is one pile. This is the second pile, third pile, fourth pile, fifth pile, sixth pile, and so on. These are the called as piles. Now, before moving to some of the theory wala part of the pile foundation, let me discuss one more thing. Pile matlab it's a long slender structure, something in this format. Okay, it's a long structure, long slender. I will use the term slender. Slender matlab patla. It's a technical term. Whenever you're telling the viva, what is a pile? It's a long slender structure which carries the load. Okay. So this is called as pile. Now, the concept behind the pile foundation was such that अपना shallow foundation का आपको depth पता है, mostly go till 5 meters or and so on, not much deep. But pile foundation it goes much deep. Now, ये कहाँ तक जाता है? जहाँ तक आपका hard strata नहीं आता, जहाँ तक आपका hard strata नहीं आता. क्यों ऐसे में hard strata को क्यों ढूंढता हूँ? जब भी मेरा building का load आएगा, this load has to get transferred, right? इस load को transfer होना चाहिए. तो मुझे एक हार्ड स्ट्रेटा की जरूरत है. दिस टाइप ऑफ पाइल्स आर कॉल्ड एज एंड बियरिंग पाइल्स. इसका मतलब जरा समझो. जो लोड आ रहा है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो रहा है. इट्स गेटिंग ट्रांसफर्ड टू माय हार्ड स्ट्रेटा. हार्ड स्ट्रेटा मतलब इट कुड बी अ रॉक और समथिंग, जहां पे मैं अपना लोड को आसानी से मैं टिका दूं. So this type of pile is called as end bearing piles. Let me go to the next one. I have my hard strata, little bit deeper. I have a pile. I'm a site engineer. मैंने pile डाल दिया. Same length का मैं pile use कर. Now, कभी-कभी क्या होता है, hard strata बहुत नीचे रहता है, हद से ज्यादा नीचे रहता है. हो सकता है आपका hard strata, आप हमेशा hard strata को ढूंढ के नहीं जा सकते, राइट? तो आप बहुत नीचे जाओगे एंड जितना आप पाइल फाउंडेशन करोगे उतना खर्चे बहुत बढ़ते हैं अपने पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर. देन इन सच कंडीशन एंड इफ योर सॉइल इज लाइक अ डेंस सॉइल और अ सैंडी सॉइल, देन यू कैन हैव अ फ्रिक्शन पाइल. अब फ्रिक्शन पाइल और एंड बियरिंग पाइल में फर्क क्या है? इवन टू द लोड विल बी देयर. आपका जो भी बिल्डिंग का लोड है, ब्रिज का लोड है, वो तो लगने वाला है. अब अपने को समझना है कि लोड ट्रांसफर कैसे होगा. पाइल का मेन काम क्या है? इट हैज टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द सुपरस्ट्रक्चर टू द सॉइल. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पाइल. नाउ इसका लोड ट्रांसफर कैसे होगा? इट विल गेट ट्रांसफर टू द सॉइल इटसेल्फ. अब बात है कि सॉइल लोड कैसे लेगा. सॉइल लोड ऐसा लेगा. सॉइल विल प्रोड्यूस अ फ्रिक्शन बिटवीन देम एंड इट कैन कैरी द लोड. So this type of pile is called as friction pile. Sometimes हो सकता है you can have a hard strata here, you can have a pile. Okay, you will have a load, basic load जो बिल्डिंग का या फिर जो भी आ रहा है, that is I'm putting as load here. हो सकता है कि आपके पास hard strata भी हो, तो यहां से एक रिएक्शन फोर्स आएगा. हो सकता है कि आपके पास फ्रिक्शन भी हो. So this type of piles are combined piles. Having end bearing plus friction. So by speaking about the load transfer, you have three types of piles. One is you have end bearing pile, जहां पे आपके लोड जो है हार्ड स्ट्रेटा पे जाता है. Second type of pile is frictional pile. Soil के friction के वजह से it takes up load. Third type of pile is a combined pile, which I've shown you. It can have both things. It can have end bearing as well as friction. Most of the term,
the most of the time we have this condition. We have this condition. But most of the time when you're moving towards your bridges, when you're moving to our bridges, we need this condition. That is, हम देखते हैं कि नीचे rock strata कहाँ पे है, and we go on. Now we are moving towards to classify the piles. There's an important question that comes in the paper. How we can classify the piles? Now this classification of piles, we can classify into many terms. Like we can classify it as per the material which is used for piling. जो पाइल की जो मटेरियल्स है उसके ऊपर क्लासिफाई कर सकते हो. मैं थोड़ा सा शॉर्ट पे जाऊंगा, नॉट मच इनटू डिटेल बिकॉज you might know it, you can research on this also. Some of the material which is used in the pile which you know is, अपने को पता है कि कंक्रीट का पाइल यूज करते हैं. You also know that स्टील का पाइल भी यूज करते हैं. Now what you don't know or what you have not seen is timber pile. टिम्बर पाइल भी यूज किया जाता है. If you want to search about your timber pile, just don't remember the city name. There's a city which is floating on your water. Just मैं आपको WhatsApp पे सेंड कर दूंगा. I just don't remember the name. तो वहाँ पे जो पूरा सिटी है वो टिम्बर पाइल के ऊपर रुका हुआ है. So that is the usage of timber pile. ये बहुत पहले यूज करता था, अभी यूज नहीं किया जाता. And you can have a composite pile. मतलब इसके अंदर 2-3 मटेरियल एक साथ अपन यूज करके अपन पाइलिंग कर सकते हैं. सेकेंड इज दैट इज we can classify it as per, we can classify the pile as per the mode of the transfer of the piles, the mode of load transfer. And इसके हिसाब से अपने को 3 piles मिले. One is, we have seen this, one is we have seen end bearing piles. Second is we have seen a friction piles, and third we have seen a combined pile. That is, as per the load transfer, I can classify into 3 terms. Why we are doing this? Because we are exploring more and more into the piles. Third, you don't know, and that is little bit important. Third is classification based on installation. Based on installation. Based on installation. Okay. मटेरियल देख लिया, लोड ट्रांसफर देख लिया. हमने एक चीज नहीं देखा, दैट इज पाइल को कैसे इंस्टॉल करते हैं. पाइल को इंस्टॉल करने के 2 मेथड्स हैं. 3 मेथड्स आते हैं, बट आई विल डिस्कस 2 ऑफ देम. वन इज यू कैन हैव अ ड्राइवन पाइल. सेकंड इज यू कैन हैव अ बोर्ड पाइल. ड्राइवन पाइल आपको तब यूज करना है when your soil is sandy. When your soil is sandy, you go for the ड्राइवन पाइल. When your soil is clay, you go for bored pile. B-O-R-E-D. Just write it nicely. Bored pile. अब इन दोनों में फर्क क्या है? शॉर्ट में बताता हूं, then we will go to the video. ड्राइविंग पाइल पे क्या होता है? You're driving it. ड्राइविंग मतलब आप पाइल को बनाते हो either in a site or at the factory or at the wherever you can make it out. या फिर प्रीकास्ट बनाते हो. प्रीकास्ट मतलब आपने पहले से बना के रखे हो, आप वो साइट पे लेके आते हैं. That is called as प्रीकास्ट. राइट. अब आपने पाइल पहले से किधर तो बना के रखा, सो इट इज प्रीकास्ट एंड यू आर ट्रांसपोर्टिंग इट टू द साइट, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रीकास्ट पाइल. दूसरा पाइल होता है, आप हो सकता है कि आप साइट पे बना रहे हो, तो साइट पे बना रहे हो, वी कॉल दैट इज इन सीटू, इन सीटू पाइल्स. इन सीटू मतलब ऑन साइट पाइल्स. तो 2 तरीके, आपने एक तो पाइल पहले से बना के रखा है, इट कुड बी अ प्रीकास्ट. दूसरा आपने पाइल ऑन साइट बनाया. अब सब लोग पूछोगे कि आप पाइल को ऑन साइट या फिर प्रीकास्ट कैसे करते हो. इट्स वेरी इजी. पाइल क्या है? एक सर्कुलर कंक्रीट का हिस्सा है. इफ आई ड्रॉ अ क्रॉस सेक्शन, इट्स अ बिग thing which has some reinforcement in this. Which has some reinforcement in this. Can have a reinforcement. So it's a reinforced concrete, ऐसे कॉलम आप पहले से बना के रखते हो. तो ड्राइवन पाइल में क्या होता है? आप पाइल को रखते हो, ऊपर से हैमरिंग करते हो. ऊपर से हैमरिंग करते हो. हैमरिंग करेगा तो क्या होगा? जो पाइल जो है, इट विल गो इनटू द सॉइल. इट विल गो इनटू द सॉइल. नेक्स्ट इज बोर्ड पाइल. बोर्ड पाइल आप क्या करते हो? नॉर्मली बोर्ड पाइल में क्या करते हो?
आपका जो साइट है वहां से आप बोरिंग करते हो. व्हाट यू मीन बाय बोरिंग? होल बनाते हो, होल से उस होल से पूरा का पूरा सॉइल को निकाल देते हो, राइट? आप उस होल से पूरा का पूरा सॉइल को निकाल देते हो. देन यू प्रोवाइड, अपने होल बनाया, आपने बोरिंग किया. Don't take it the term hole. You have to, tell with the technical term. That is, you have made a boring. This is called as boring basically. इसमें से आपने सॉइल को पूरा बाहर की तरफ निकाला. You basically put a casing here. Casing मतलब एक स्टील का स्ट्रक्चर है जो आप डालते हो इसके अंदर, ठीक है? Then what you do is you put reinforcement cage. मतलब आप reinforcement डालते हो, स्टील स्टीरअप्स, लॉन्गिट्यूडनल reinforcement, ट्रांसवर्स reinforcement डालते हो. इसके बाद इस पूरे चीज को कंक्रीट से भरते हो. इसके बाद इस पूरी चीज को कंक्रीट से भरते हो. That type of pile is called as board pile. Remember one thing, driven pile are used in sandy soil, board pile is used in clay soil. Why I'm telling this again and again, this is the main thing that you should understand. कहाँ पे driven pile और कहाँ पे board pile use करना है. Let me go to the video which we have. I think some of the video I have. This is the video of driven pile. Let me make it in full screen. Yeah. Can see the hammering, right? ऊपर जो दिख रहे हो आप, अगर मैं उसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, दिस, ये देखो, आप जब देखोगे इट विल बी मूविंग. सो दैट इज कॉल्ड एज हैमरिंग. इफ यू कांट सी द पाइल, आई विल शो यू द पाइल. दिस इज द पाइल. This whole thing that you can see is the pile. There's a machine which puts the hammer in that. So this is a type of driven pile. I will play the video now. See. Now we are going to see a boring pile. Let me take it at somewhere here. Yeah. Let me remove the animation which I've made. All right. Now you can see that, बोरिंग पाइल. बोरिंग में देखो क्या कर रहा है, वो जो सॉइल है वो निकाल रहा है अंदर से, and then you put the concreting in that. Now if you can't see the video from here, I will show the animation also, which I've kept somewhere here, or this one. I think this one is there. This is an example of your board pile which you have. जैसे ऑगर मशीन. अब आप पूछोगे कि ऑगर क्या है. इट वाज इन G1 where you have seen types of borings. That comes here picture. उसका theory कुछ नहीं है, but that is how you make a bore. Borehole कैसे बनाते हो. ऑगर था, you have many of the types there. Okay. This is a type of auger that you use. उससे क्या होता है, जो soil collect होता है, you take the soil out. तो नीचे जाने दो. आप जाते हो हार्ड स्ट्रेटा तक नॉर्मली जाते हो, होल बनाते हो, रेनफोर्समेंट डालते हो. आफ्टर रेनफोर्समेंट, एक्चुअली इसको रेनफोर्समेंट केज बोलते हैं, हम ये पहले से बना के रखते हैं और डाल देते हैं उसके अंदर. एंड देन यू अप्लाई द कंक्रीट. द कंक्रीटिंग इज डन. दैट्स इट. सो वंस यू कंक्रीट दैट, वो पूरा का पूरा एक पाइल बन जाएगा. सो दिस इज द टाइप ऑफ board pile. Now there's other classification of pile also which I have to discuss. I will discuss in the same slide because I need space here also. Yeah, the fourth type of classification is based on, displacement of the soil. It's based on displacement of soil. Based on this, there are two types of piles we can have. One is we can have a displacement pile. We can have a displacement pile. Second is we can have a non-displacement pile. We can have a non-displacement pile. Once you understand driven and bored, now you can understand displacement pile and non-displacement pile. ड्राइवन पाइल में हमने क्या किया, हमने पाइल लिया, ऊपर से हैमरिंग किया. सॉइल क्या होगा, सॉइल हिलने वाला है, राइट? सॉइल थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा. So all the driven piles are displacement piles. So these are the driven piles only. नाम अलग अलग है, सेम चीजें हैं. ना अगर आप बोरिंग करते हो, होल बनाते हो, उसी साइड से आप सॉइल को निकालते हो, you're not disturbing the surrounding soil. So all the bored piles are non-displacement piles. So this is bored piles.
Hence, you should understand when to go for driven piles. अगर आप देखते भी हो, if you are moving on the road, if you are going on Mumbai, Navi Mumbai, anywhere, you will see this, hammering taking place. Hammering means the soil is sandy. This is how you should, improve your civil engineering quest. That is, the soil is sandy, and the type of piling that is going on is driven pile. So, this is how you should go it. Okay, now let us go into much detail. Once you understand the classification of the pile, now अपने को एक चीज चाहिए. हमने देखा कि पाइल क्या होता है, हमने टाइप्स देख लिया, हमने क्लासिफाई कर लिया. अब अपने को चाहिए, अगर मैं एक पाइल लू, टेकिंग अ पाइल, just a minute, yeah, taking a pile, let me draw it some more down, let me correct it. I have the PPT for this also, but वो फटाफट खत्म हो जाएगा. I don't want that also. ठीक है. Now let me note the ground surface. This is my ground surface, which is there. It's a circular pile. ठीक है. It's a circular pile. Now अब आते कुछ चीजों पे, कुछ टेक्निकल चीजों पे. पहला चीज, मुझे हर पाइल के अंदर एक चीज निकालना पड़ता है, दैट इज ये लोड कितना कैरी करेगा. एंड दैट इज वी हैव टू डिटरमाइन पाइल लोड कैपेसिटी, पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी. इसका मतलब ये जो पाइल है वो कितना लोड आई एम डिनोटिंग इट बाय क्यू यू, कितना लोड कैरी करेगा. व्हेन आई एम टेलिंग इट एज क्यू यू, इट मींस अल्टीमेट लोड. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोड दैट यू कैन हैव. वन इज अल्टीमेट लोड एंड वन इज सेफ लोड. दिस इज कॉल्ड एज अल्टीमेट लोड. मतलब अल्टीमेटली मेरा पाइल कितना लोड कैरी करेगा. हर जगह पे अपने को ये ढूंढना है कि मेरा क्यू यू कितना होगा, मेरा क्यू यू कितना होगा. दिस वी हैव टू फाइंड. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक पाइल के अंदर कितने फोर्सेस होते हैं. मैंने एक चीज बोला, आपके पास जो पाइल है, इट कुड बी एंड बेयरिंग पाइल. एंड बेयरिंग सम फोर्सेस हियर, and you will have some load that is taken by the soil, and that is QB. QB we will call it as, point bearing resistance or end bearing resistance. QB, I will call it as, I'm giving two names for it. I can call it as end bearing resistance, or I can call it as point bearing resistance. Point bearing resistance. Second चीज मैंने आपको बताया कि same pile could have a friction resistance also. Friction resistance, I'm showing it in this way. It can have a friction resistance also. So I will call this as QS. That is skin friction resistance. Skin friction resistance. Okay. Now for determination of pile load carrying capacity, you have four methods for it. You have four methods for it. I'm just writing the methods. We're going to detail in one of the method now. The first method is we can use a static analysis. Second method है dynamic analysis, आप यूज कर सकते हो, can use a dynamic analysis. Third method है आप on site के अंदर ही आप पाइल लोड टेस्ट कर सकते हो, and based on penetration test. Now in today's lecture we are in most of the lecture that we are going to discuss, we would be in static analysis only because it's require more time. We are in static analysis that we are going to take it now also. मैंने आपको बताया कि अपने को हर जगह, हर फॉर्मूला पे, हर मेथड पे अपने को यही निकालना है कि अल्टीमेट लोड कितना रहेगा. अपने को ये निकालना है कि क्यू यू मतलब अल्टीमेट लोड जो मेरा पाइल उठाएगा वो कितना रहने वाला. सो आई टोल्ड यू इन एवरी पाइल यू विल हैव एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस, जो नीचे की तरफ से जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज कॉल्ड एज एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस. सेकंड चीज जो आएगा स्किन फ्रिक्शन आएगा. अब इसको स्किन फ्रिक्शन क्यों बोलते हैं? पाइल आपका ऐसा है, सर्कुलर है, राइट, उसके सरफेस पे फ्रिक्शन लगता है, सो इट्स कॉल्ड एज स्किन फ्रिक्शन. सरफेस मतलब जो अंदर नहीं लगता, सिर्फ बाहर के जो circumference है वहां पे फ्रिक्शन लगता है, so it is called as skin friction. Now based on this I can write a formula. I'll call it as QS. Okay, based on this I can write a formula. My ultimate load carrying capacity of my pile is equal to my end bearing resistance plus skin friction. अब मैं आपको हिंदी में बताऊं, मेरा जो टोटल लोड पाइल लेने वाला है वो दोनों के बेस से लेने वाला है. एक है एंड बेयरिंग के बेस से लेगा और दूसरा स्किन फ्रिक्शन के बेस से लेगा. नाउ वी आर गोइंग टू मच डिटेल. आई कैन राइट इन दिस वे आल्सो. माय एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू माय bearing capacity of the soil at end multiplied by
my area of my pile multiplied by my area of my pile at the base. So AB is coming, plus my skin friction is equal to some unit skin friction, that is some coefficient of skin friction, multiplied by the circumference इसी चीज को अगले स्लाइड पे डिस्कस करते हैं, because this is required in detail. Please let me know if you are not getting anything so that I can explain again also. Okay, मैंने आपको बोला हर पाइल का जो अल्टीमेट लोड है it would be taken by your bearing resistance, and I have told that this bearing resistance is equal to, if I am drawing this pile, okay, this was your उसका कुछ ultimate bearing capacity रहेगा which is 2B multiplied by area of the pile at the base. AB means area of the pile at base. कितना रहेगा एरिया इक्वल टू, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन निकालता हूं इट वुड बी इन दिस वे, इट्स अ सर्कल का एरिया कितना रहेगा, इफ आई एम कॉलिंग द डायमीटर एज d फॉर माय पाइल, अगर मैं बोलता हूं कि डायमीटर d है तो एरिया कितना रहेगा, इट इज π/4 इनटू d², ओके, प्लस स्किन फ्रिक्शन में मैंने क्या बोला, देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस यूनिट, स्किन फ्रिक्शन resistance, it's a coefficient type thing, multiplied by the surface area of the pipe. surface area मतलब ये जो एरिया है, this area, इसमें जितना एरिया, so AS is your surface area of your pipe. How much is the surface area of the pile, or how much is the surface area of this circle? It's a circle. अगर top view में देखो तो it's a circle, and this is the surface area that we are talking about. So multiplied by length of the pipe, multiplied by the length of the pipe that we can take. Any doubt in this formula that you have, please let me know. Then only we can move ahead. This is very important. This is the basic of your pile foundation. And on site पे भी ऐसे होता है. How you can determine कि तुम्हारा pile load कितना लेगा कि नहीं लेगा, उसकी basis पे ही हम आगे की मतलब आगे का डिजाइन करते हैं. So again I'm telling, your pile footing or the pile foundation or a pile, the total ultimate load that it can carry, it depends upon two things: the end bearing resistance and the friction resistance that it has. So end bearing resistance is equal to the bearing capacity of the soil multiplied by, plus friction resistance is equal to some unit friction resistance multiplied by circumference area Now let's move into some more detail, and the previous equation which I have shown is very important. On that basis only we are going to move ahead. Now we are going to see the capacity of single pile, एक pile का capacity. I'm so sorry, let me draw pile very neatly. अब इसको neat बोलेगा तो neat भी नहीं है. This much only I can do. So we are finding the capacity, means the ultimate load, not for set of pile. And in this lecture we are only moving in cohesive soil. हम सिर्फ cohesive soil के लिए आज derive करेंगे. Okay, let me draw it neatly. You have some ground surface here. Now whenever I am telling cohesive soil, इसका मतलब C का वैल्यू है. मैंने हर टाइम आपको बोला एक सॉइल के अंदर C भी होता है, एक सॉइल के अंदर phi भी होता है. अगर cohesive soil है, C है, phi नहीं है, that means phi is equal to 0. Now to stop this lecture, because only 1 minute is remaining, just click on the same link so that we can continue this. Only this part I will discuss, then we will end it up.